Hello students, welcome back again. So today we learn English language, and in English language our topic is the sentence. So do you know what is a sentence? A group of meaningful words that gives complete sense is called sentence. Group of meaningful word. Okay, so वर्ड जो होते हैं जिनका मीनिंगफुल होता है, मीनिंग होता है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम और लिखें सही से जिसका कंप्लीट सेंस हो, दैट कॉल सेंटेंस. ओके, सो हियर आर योर एग्जांपल. लुक एट द एग्जांपल. द ferry run train fast. And see the next sentence. The train run very fast. So student, see the both sentence. In this sentence, which sentence is correct? The very runs train fast or the train run very fast? Yes, this is a correct sentence. Okay, here are group of word and the group of word written in a simple manner, in a complete sense manner. So ये हमें जो लिखा है वो हमें समझ में भी आ रहा है. द ट्रेन रन वेरी फास्ट. ओके, और फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है? द वेरी रन ट्रेन फास्ट. ये ना कैपिटल लेटर से स्टार्ट है और ना लास्ट में फुल स्टॉप है. सो दिस इज आर रॉन्ग सेंटेंस. और एवरी सेंटेंस इज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क अकॉर्डिंग टू देयर सेंटेंस. Class, always remember that the sentence start with a capital letter and end with a full stop. If you not write the capital letter in the beginning of the sentence and end with the full stop, so your sentence is wrong. Okay, now come see next. Every sentence consists of two parts. हर sentence के two parts होते हैं. Number one is the person or thing which we speak about. And number two is what we say about that person or thing. Example, look at the example. The maid servant mopping the floor. The person or thing which we speak about is called subject of the sentence. हम जिसके बारे में बात करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं. ओके, सो एग्जाम्पल में द मेड सर्वेंट मॉपिंग द फ्लोर, इसमें हमने किसके बारे में बात की है? ने मेड सर्वेंट के बारे में बात की. सो जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट. एंड नेक्स्ट इज व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज द प्रिडिकेट ऑफ द सेंटेंस. हम सब्जेक्ट के बारे में क्या बात किए हैं? द सर्वेंट मॉपिंग द फ्लोर. मॉपिंग द फ्लोर इज आर प्रिडिकेट. हम सब्जेक्ट के बारे में जो बात करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिडिकेट बोलते हैं. ओके, सो हियर आर यू वन मोर एग्जाम्पल. सब्जेक्ट इज अमन, नेक्स्ट इज प्रिडिकेट इज प्लेज वेल, एंड हियर द लिटिल ब्लैक डॉग with the poor beggar. So students always remember that the subject is in one word also and more than one word, and predicate is also one word also and more than one word. Subject आपका एक word में भी होता है और एक से ज़्यादा word में भी होता है. predicate भी आपका एक word में भी हो सकता है और एक से ज़्यादा word में भी हो सकता है. Okay, and here are your exercise. Exercise number 1 is, in the following sentences separate the subject and its predicate. Here are your sentence and you have to separate the subject and predicate. Like number 1, one I have done for you, and rest you have to done for yourself. Number 1 is Suresh love to play hockey. Subject you have to separate like that. Subject, what is subject? Suresh, like that, comma, then predicate, write predicate. And what is predicate here? Loves to play hockey. So write love to play hockey like this. And number 2 is Mrs. Gupta is a kind lady. Number 3, Deepika and her friends play together. Number 4, New Delhi is the capital of India. Number 5, the maid servant is mopping the. Here are your exercise number 2. Rewrite these sentences in their correct order with capital letter, full stop or question mark. Number 1, happy are not the always rich. So students, here is a
sentence which has not written in correct order, and you have to write in correct order with using capital letter, full stop and question mark according to the sentence. Here number 1 I have done for you, and you know that rest you have to done with yourself. Number 1 is answer number 1 is the rich are not always happy. Number 2, daytime sleep in owls. The right answer here. Number 3, sun moves the earth round the. Number 4, done lesson your have science. Number 5 is Mana National is Jana our anthem Gana. So students, do your work. Till then, bye bye.